हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस बीए 6th सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द पेपर इज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इन क्वेश्चंस को जैसे आपका पेपर आना है उसी तरह से प्रिपेयर किया गया है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस यूनिट वाइज ही तैयार किए गए हैं। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सिलेबस देखने के लिए इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट खोल के चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और अगर वहाँ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और ये वीडियो पंजाबी और हिंदी मीडियम में भी बनाए जा रहे हैं। जो आपको ज़रूरत है वो कमेंट कर देना, उसके अकॉर्डिंग उसी मीडियम में ये बना दिए जाएंगे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस। राइट डाउन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड देन व्हाई इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट एंड देन हाउ आर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को रिलेटेड एंड देन राइट डाउन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन रियलिस्ट एंड आइडियलिस्ट अप्रोच and then write down any two limitations of national power and then write down any two definitions of collective security. Students, आपका सिलेबस क्या है उसके लिए आप अपनी प्लेलिस्ट खोल सकते हो। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 4 आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट आइडियलिस्ट अप्रोच एंड देन व्हाट इज़ मॉर्गेंथ्यूज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिज्म एंड देन हाउ नेशनल पावर इज़ बेस्ड ऑन जियोग्राफी एंड देन राइट डाउन 2 बेसिक assumptions of collective security and then what is the purpose of collective security and next why are unipolar world emerged after the end of Cold War and then what do you mean by multipolar world and then what is world order and then what is multipolar world order and then what was the purpose of creating SAARC and then what is new international economic order and then what do you mean by detente and then what is NATO. Name 2 countries of Warsaw Pact and then write down any 2 differences between old and new Cold War and then what do you mean by multipolar international order and then write down the names of member of SAARC and then explain the meaning of non-alignment and then what is G8 and next write down any 2 factors of NIEO and then who is the author of the book Politics Among Nations and next international politics is an autonomous discipline comment and then write down any 4 basic assumptions of idealist approach and then how realist approach to the study of international politics opposed to peace explain and then write down 4 main limitations of national power and then which period is known as the golden age of balance of power and next how collective security is important in international politics and then what was the role of NAM in transformation of bipolarity and then how do you understand by American hegemony and then write a short note on BRICS and what is SAARC name member countries and next what do you mean by BREXIT and explain BREXIT and what is European Union and then what is the full form of UNCTAD and next differentiate between international relations and international politics and then what is regionalism in international politics and next is which is the famous book written by Hans J. Morgenthau when it was published and next which US president advocated idealism in international politics and then what do you mean by national power and then write 4 elements of national power and next how is collective security important in international politics and then what is role of balance in the balance of power and then in your view which are 4 emerging powers in contemporary world and then how US is the lone superpower and then which are the BRICS countries
and what is Arab Spring, and then where are SAARC Secretariat and South Asian University located, and then how BRICS is related to European Union, and write down any two definitions of collective security, and next write down any two similarities between collective security and balance of power, and then write down any two differences between old and new Cold War, and then what do you mean by multipolar international order, and then define NIEO, and next write down any two factors of NIEO, and then who coined realism in international politics, and then role of peace in idealist approach, and then world public opinion as a limitation on national power, and then four main characteristics of balance of power, and what do you mean by collective security, and then explain globalization, and next new Cold War and disarmament, and then what do you mean by USA hegemony, and what do you mean by new international economic order, and what do you mean by South South cooperation। ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट में है डिफाइन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड राइट डाउन इट्स स्कोप। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है डिफाइन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिस्कस इट्स स्कोप एंड यूटिलिटी। ये दो क्वेश्चंस इकट्ठे कर दिए गए हैं, इसी तरह से मोल्ड करके आपके पेपर में क्वेश्चंस आने हैं, और जो क्वेश्चन बनाए गए हैं इसी में से आपका पेपर आना है, मोल्ड करके ज़रूर डाला जाता है। यहाँ भी मैक्सिमम कोशिश की गई है कि उसी तरह के क्वेश्चंस मोल्ड करके यहाँ डाले जाएं, और ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे वहाँ क्वेश्चन का आंसर देना है। And next, idealist approach in international politics emphasizes on dependence upon moral values and the development of international institutions and international law. Discuss main features of idealist approach in the light of the above statement. And then international politics is struggle for power in the light of this statement. Discuss the nature and scope of international politics. And then make a critical evaluation of idealist theory for studying international politics. And then what do you understand by international politics, why we need to study international politics, and then critically evaluate the idealist approach to international politics, and then discuss Morgenthu's realist theory of international politics, and then define international politics, discuss its nature and significance, and then critically examine the contribution of Professor Hans J. Morgenthu to the study of international politics. And next unit second के long questions, what do you mean by national power, discuss the elements of national power, and then define balance of power and make critical evaluation. Define national power, discuss its nature and limitations. And next है national power is combination of military power, economic power and psychological power. Comment. And then what do you mean by collective security, write down its characteristics, and then how the UN Security Council deals with the question of collective security, and then what are the elements of national power, discuss limitations on national power, and then how collective security can ensure peace, discuss its salient features, and then discuss the meaning and methods of balance of power, and critically examine the working of principles of collective security system as laid down by UN Charter। ये यूनिट सेकंड था। अब है यूनिट थर्ड के लॉन्ग क्वेश्चंस, राइट डाउन अ नोट ऑन यूनिपोलर इंटरनेशनल सिस्टम, एंड देन राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर ऑफ द अमेजिंग वर्ल्ड order, and then what is unipolar system, write down the factor responsible for its establishment in the contemporary international relations, and then write down the effects of COVID-19 on world war, and then what do you mean by multipolar world, discuss the reasons of its emergence after the end of Cold War, and then discuss the prominent features of emerging world order, and then discuss the implications of emergence of multipolar world on international politics, and then discuss the basic characteristics of emerging world order, and then write down the characteristics of the nature of the emerging world order, and then discuss the emerging trends of world order in modern times, describe the features of multipolar world। स्टूडेंट्स इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सिलेबस यहीं पे आप देख सकते हो। अगर इसके अलावा आपको कोई और ज़रूरत हो तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।
और बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी ये ज़रूर शेयर करना, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत मेहनत से इनको तैयार किया गया है, इसको बहुत अच्छे से आपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, उससे तैयारी करनी है। एंड 4th यूनिट के क्वेश्चंस हैं, राइट एन ऐसे ऑन द ऑब्जेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क, इट्स प्रॉब्लम्स एंड इम्पॉर्टेंस फाउंड इन द वे of its smooth working. And then SARC has failed to solve problems of the region, yet its importance cannot be ignored. In the light of the statement, give your suggestions to SARC. And then discuss the problems of SARC has faced throughout its existence. How, in your view, can these problems be solved? Demand for new international economic order comes out of prevailing economic inequalities among the nations. Discuss. And then what in your view are the reasons of failures of SARC as a regional organization? And then what is new international economic order? Discuss its main tenets. And then write down the major demands of NIO. Is it still a marriage? And discuss this statement. And then write down the factor responsible for the establishment of new international economic order. And then explain the objectives and problems of the European Union. And then what is the new international economic order? Describe the major objectives of NIO. स्टूडेंट्स, ये थे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो देखने के लिए इन टच रहना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना आपका पेपर कैसा होता है। जो पहले आपका 5th सेमेस्टर का यहाँ से तैयारी की गई थी, उसका जब रिज़ल्ट आएगा Feb-March में, तो उसमें कितने मार्क्स आती हैं ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।